grandfather's cat. Okay, I'm going to start reading, so listen to me carefully. Grandfather's cat. I take care of the white, fat, furry cat with my grandfather. Grandfather shows me how to care for the cat. I put milk in a bowl and food in a pan. The cat likes milk and the cat food. Whenever the cat is ill, I and my grandfather take her to vet. The cat plays with me inside and outside the house. She runs to look for the big ball. After we play, the cat and I take a nap. Now I start again reading with translation. Grandfather's cat, दादाबू की बिल्ली. I take care of the white, fat, furry cat with my grandfather. मैं अपने दादाबू के साथ सफेद मोटी प्यारी सी बिल्ली की हिफाजत करता हूँ या देखभाल करता हूँ. Grandfather shows me how to care for the cat. दादाबू मुझे बताते हैं कि बिल्ली की हिफाजत कैसे की जाती है, उसका ख्याल कैसे रखा जाता है. I put milk in a bowl and food in a pan. मैं प्याले में दूध और बर्तन में खाना रखता हूँ. The cat likes milk. बिल्ली दूध पसंद करती है and the cat food और अपने खाने को. Whenever the cat is ill, जब कभी बिल्ली बीमार पड़ जाती है, I and my grandfather, मैं और मेरे दादाबू take her to vet. तो हम उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं. The cat plays with me. बिल्ली मेरे साथ खेलती है. Inside, अंदर and outside, बाहर the house, घर के. The cat plays with me inside and outside the house. बिल्ली मेरे साथ घर के अंदर और बाहर खेलती है. She runs to look for the big ball. वो बड़े गेंद को तलाश करने के लिए भागती है. After we play, खेलने के बाद, the cat and I take a nap. बिल्ली और मैं हम सो जाते हैं. समझ आई? इसका आपने ट्रांसलेशन भी करना है और अच्छे से रीडिंग भी करनी है. क्लियर बच्चों? ये हमारे यूनिट नंबर 2 की रीडिंग थी ट्रांसलेशन के साथ. आप लोग भी अच्छे से इसकी रीडिंग करेंगे और ट्रांसलेशन करेंगे. ठीक है?